Good afternoon. This is Suraj Singh speaking from Bharat, India, and on this is 11th October 11, 2020. Just reflecting to you about concrete specifications. Concrete, that is RCC concrete, structural concrete, which is used everywhere, and I'm interested to share with you some information about very reliable specification, practical specification that is used in Gulf countries and which is based on international codes, American codes, British codes, European codes, Gulf codes, and everything is assimilated in that. I talked about this in last many videos, and because I want to complete this, last time I covered up to 54 pages, and I'll show you that file now because that file is now page 1, and I'll move it to further to pages that I covered. I covered general, I covered in this there are various parts, just you can see these parts. I'll repeat: aggregate, cement, just materials, water and mixtures, property requirements, concrete plants, transportation and placing of concrete, formwork, curing, reinforcement, construction joints, inspection and testing of hardened concrete, protective coatings with concrete, hot weather concrete, miscellaneous precast concrete, pre-stressed concrete, water retaining structures, general, quality assurance and quality control, foundations and retaining structures, road work, drainage works, mechanical, electrical equipment. And there are certain references like ASTM, BSGSO, and then various notations are there, which I'm not going to repeat. So I move further, and then implementation, how to implement the field quality control, and then rejected materials, records, etc., and various tables giving various properties of that regarding cement, aggregate, reinforcement, water, and various tests, slump tests, other tests, etc. And then we go further, move on to various aggregates, and then we move to various all types of aggregates herein. No need of repeating, I already done it last video, so this is now approval, etc. And then sampling, the quality and testing, and storage, contractor plant, all we have talked of in length, and then various tables like that. Then we'll move on to fine aggregate concrete mortar, and then coarse aggregate for concrete, combined aggregate for concrete, combined means aggregate for concrete only, and washing and processing, lightweight aggregate, coarse recycled aggregate, and then requirements of coarse RCA and coarse RA, etc. And then we went on to other one, cementitious materials. We talked on cementitious materials in this, and then later on admixtures also we talked of other than this. So we are just moving on to fast, just to remember, just remind you what we talked of last time. And this is water, and you can say then water properties. It moves on further, and this goes on and on, and you can see water we talked of. Then we talked of health and safety and admixtures. Now we talked of various admixtures in this, and then we move further on to that waterproofing, etc., whatever it was. And then we talked of property requirements of concrete, and then property requirements continued, and it was then, you remember I talked last time. If you do not remember, you can go to last video and see that one. That one's up to you whether or not to see. I can't force you. This continuous property requirements, and then massive concrete, etc., various classes of reinforcement, corrosion, and then sulfate exposure classes, fresh concrete, then grades of concrete, and then you can say property requirements. Then you can say further on to that, you may say that was not coming in. Yeah, it's coming in, it's no problem. So I'm moving on to that. So it's the one, and then recommendation sulfate resistance, etc., and durability related properties. Then design of concrete mixes, very important part. Then we can say we went on to concrete, and then massive concrete, self-compacting concrete, pile concrete,
underwater concrete, like that, you know, underwater concrete, and then shotcrete we talked of. So no fines concrete, and then we are now on page 54. That's heavyweight and radiation shielding concrete we talked of in details. Fiber reinforced concrete, and now let's start from where we can. I think we should start from somewhere here. Let's go back to previous one, and that is heavyweight and radiation shielding concrete. Let's start about this. Just overlap a little one page, no problem. Heavyweight and radiation shielding concrete. Quality of aggregate should comply with requirements of QCS for normal weight aggregates, ASTM C637 for heavyweight aggregates, and ASTM 6 C638 for aggregates to be used in radiation shielding concrete. When ferrophosphorus aggregates are used, tests shall be made to determine if gases non-toxic might be released during construction. Aggregates shall be checked for every delivery to ensure that they conform completely with purchase specifications. Aggregates shall be freely evaluated for effects of deleterious substances or aggregate coating on concrete, the strength or promotion of corrosion in metallic aggregates or embedments. Chemical properties of all high density aggregates must be provided to engineer for evaluation before use with consideration given to chemical reactivity, particularly in highly alkaline environment as found in cement paste. Tests for alkali aggregate reactivity shall be determined from each source and supply and be made every 3 months. Fresh density of high density concrete shall be made from each truck. Lead shot concrete shall not be used for structural concrete. Thermal conductivity, elastic behavior, and shrinkage, hardened density, strength, as well as other hardened concrete properties shall be tested and verified before use of concrete. Fiber reinforced concrete. Now let us say what we are talking of. What type of concrete can be used in this for high density concrete? It's a classification of fiber reinforced concrete be made based on material type of fiber incorporated. Type 1 is steel fiber reinforced concrete. Type 2 is glass fiber reinforced concrete. Type 3 is synthetic fiber reinforced concrete. Type 4 is natural fiber reinforced concrete. So let us say steel fiber reinforced concrete type 1 contains stainless steel, alloy steel, or carbon steel fibers conforming to specification of BSEN 14889-1 or ASTM A820/8 A820. You may shoot shots also, steel shots. Type 2 is glass fiber reinforced concrete, contains alkali resistant AR glass fibers conforming to specification C1666/C1666M. Type 3 is synthetic fiber reinforced concrete, contains synthetic fibers for which documentary evidence can be produced confirming their long-term resistance to deterioration when in contact with moisture and alkalis present in cement paste and substances present in admixtures and shall conform to BSEN 14889-2. Type 4 natural fiber reinforced concrete contains natural fibers for which documentary evidence can be produced confirming their long-term resistance to deterioration when in contact with moisture and alkalis present in cement paste and substances present in admixture. Test method ASTM D6942 shall be used to determine yes, yes. हाँ मधु
ठीक है तभी यार। पहुंच गया बंटी? बंटी तो यहाँ नहीं आया। तो कहाँ गया फिर वो? वो तो वहीं गया कोमल के वहाँ। अच्छा, नोएडा गया है? हाँ, क्योंकि उसको वहाँ अपने बाल कटवाने थे ना। अच्छा वहीं से कटाता है ना वो बाल। अच्छा। अच्छा, वो तो कहते वो काम करना है ऑफिस का। और उसके ऑफिस की जो रिपोर्ट बनानी है ना 2-3 दिन। हाँ तो यहाँ पे मैंने कहा वहीं रह ले, क्योंकि यहाँ फिर डिस्टर्ब होता है मेरे साथ। हाँ हाँ यहाँ इसके पापा को फिर कभी प्रॉब्लम हो गई तो टेंशन में आ जाता है। हाँ। फिर यहाँ मेरे को डर डर के चिक्की करता रहता है। अच्छा। मैंने कहा तू वहीं चला जा, हाँ बाल भी कटवा लेंगे, फिर नहीं कटवाएगा बाल, ये दाढ़ी बढ़ रही है बहुत। हाँ। और वहाँ जो काटते हैं ना वो पूरा वो पहन के काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चल ठीक है, वो तो कैसे भी काट के। पीपीई हाँ पीपी हाँ किट पहन के। हाँ। तो सैनिटाइजर करके तब भेजते हैं अंदर ना। अच्छा अच्छा। तो वहीं से जब से लॉकडाउन हुआ है वहीं से कटवा रहा है ये। चल ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से कटवा ले। मैंने कहा वहीं चला जा। हम्म। अब जाके फिर कोमल को सुना रहा है। हाँ उसका कमरा है ना जो, वो कोमल ज्यादा साफ नहीं करती कि भाई चलो, उसको पता नहीं था ना ये अचानक आ जाएगा एकदम। अच्छा। कह रही मम्मी आया है, अभी आते ही सीधा मुझे वहाँ सफाई करने घुस गया कमरे में। हाँ तो तुझे सुनाया तूने 1 महीने से इस कमरे में सफाई हाँ सफाई नहीं करी। मैंने कहा मैं तुझे कह रही थी ये आएगा, हाँ लेकिन ये नहीं पता था ना ये पहुंच जाएगा जल्दी। हाँ कह रही ऐसे सुना रहा है मुझे, हाँ। तो जब से ना मैं गया हूँ तूने एक दिन भी झाड़ू नहीं लगाया। ऐसे लड़ते रहे आपस में। और लड़ने तो क्या करेंगे, इनकी आदत ही है। कह रही है, मैं कह रही हूँ तुम्हारे घर से मैं एक बार झाड़ू पोछा लगा। हम्म। कह रही मैं अपने कमरे की करती हूँ, ड्राइंग रूम की कर लेती, रसोई की हाँ जब है तो मैं तो कभी दूसरे तीसरे दिन करती हूँ। हाँ। इसका कमरा हम्म जब रहता नहीं है हम्म। तो कह रही सुनाएगा जरूर। अब तो उसकी आदत है, क्या करें, उसको हजम नहीं होता बिना सुनाए। है। उसको हजम नहीं होता। मैंने तो इसको कहा, मैंने तो यहाँ मत रहिए वहीं चला जा तू। चल तो कोई बात, मैं समझा घर पहुंचा है सीधा। अब तो भाई 2 दिन बाद ही आएगा यहाँ आया तो। चल जब आएगा आ जाएगा। जब इसका ये काम होता है ना, ये मेरे से यहीं फ्री होता, हाँ रिपोर्ट बनानी होती है हाँ हाँ पूरे महीने की ना, हाँ। तो 2-3 दिन लग जाते हैं। हम्म। तो यहाँ ये ड्राइंग रूम में बैठता है, कभी कमरे में जाता है, हाँ उसको ये रहता है पापा खांस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ। तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक ही है, अब तबीयत तो थोड़ी ख़राब है, वो तो यही है भाई, पैर का चक्कर है, बाकी में थोड़ी प्रॉब्लम है कोई। हिला रहा है ना पेट? हाँ हिलाता रहता हूँ तो हल्का हल्का, तो कोशिश करता हूँ उठा भी लूँ। हाँ, अभी उठाता हूँ हल्का फुल्का, उठा पाता हूँ नीचे से धीरे 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 जैसे जैसे हिलाता है ना, हाँ। हिलाने के बाद कोई हल्का सा जैसे 1-2 पॉइंट उठा लिया कर। ऐसे नहीं उठता ना, वो तो अपने आप नहीं उठता, वो तो नीचे से दूसरा अच्छा, पैर लगाता हूँ तब उठता है। पहले भी नहीं उठता हाथ था, मेरा पहले भी नहीं उल्टे उठता से था। हाथ भी तो नहीं लगता ना। नहीं, नीचे से पैर लगा के ना, दूसरा वाला, हाँ, उससे कोशिश थोड़ा उठाते ही करता हूँ। दूसरे वाले पैर को सपोर्ट करता हुआ है ना। हाँ, क्योंकि मेरा वैसे ही नहीं उठता था, ये मैं 2-3 बार गिर पड़ा था ना, तो हाँ। उसके अंदर नस वस एक आध खराब है पहले से ही। अच्छा तो मैं इसलिए एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था आजकल। अच्छा जो अच्छा। पहले दोनों पैर उठा के करता था ना, हाँ, तो कई बार मैं गिर गया, सड़क पे भी गिर गया था, तो अंदर कहीं ना कहीं चटक पटक थी कुछ। अच्छा। तो वो पहले से ही है, तो मैं इसको इंडिपेंडेंटली तो उठा ही नहीं सकता। हाँ हाँ। तो नीचे से उठाता हूँ, ये कि अब देखते हैं क्या होता है बाद में, हाँ, चलवाएगा तब पता लगेगा ना। ये तो है ही भैया, चलने लगे तो बहुत ही बढ़िया है। जल्दी अपने वाकर मिल जाए, वाकर पर पूरे ये लेटरिन मतलब बाथरूम जल्दी से हो वल्दी का जाए। तो खैर मुझे नहीं है कि जल्दी चल पाऊंगा, क्योंकि वेट मेरा ज़्यादा है थोड़ा। तो हाँ, उसमें एकदम तो नहीं चल पाऊंगा, लगेगा एक 1-1.5-2 महीना तो लग जाएंगे आराम से। नहीं नहीं चलो, लेकिन इसे कमरे से बाथरूम तक तो चला हाँ, जाए, क्या बाथरूम फर्क तक का हो पड़ेगा। जाए वही काफ़ी है, लेटरिन वेटरिन अपने आप कर ले आदमी। बस लेटरिन करने बैठे बैठे बाथरूम की सीट पे हाँ बस, नहा ले बस। बस इतना ही है, बाकी तो खाना वाना तो खा ही लेंगे जैसे भी वो खाना तो है। खाना खाना तो मिल ही जाता बना बनाया। तो ये है भाई, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाएंगे, घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, इतना ही है। बस और क्या, वो तो चलो बंटी आ जाए तो सामान खिला दिया ना, 2-4 दिन में आ जाए, 1-2 दिन के लिए फिर चला जाए, ये इस भी सामान ठीक भी है। कोई वैसा तो नहीं है ना, दुकान का सामान तो आ ही जाता है, घर किचन का तो आ ही जाता है। हाँ, ये दाना पाना मैंने लाना कह है। रही थी आएगा तो मासी का आटा वाटा दे ही हो। अब ये तो और मुझे पता नहीं नौरातों क्या का दे भी गया है मैंने वो। मैंने भेज दिया था। अच्छा। नौरातों का भी भेज दिया था, ये फिर कब है मैं नवराते? कहते अब शनिवार
ये तो और काम पड़ जाएगा इसका, हाँ वही तो मुश्किल हो जाएगी इसको। तो आज वैसे तबीयत ख़राब थी उसकी थोड़ी, अच्छा थकावट थी, सुबह बुखार भी था उसको, उसने गोली दी फिर इसे लड़के ने। अच्छा तो अभी थकावट है उसको, बीपी तो ठीक है, अच्छा। अभी बुखार भी ठीक है, पर थकावट है। गोली लाया दूसरी वो केमिस्ट से, हाँ तो अभी देगा क्या देगा पता नहीं। अच्छा। तो आज तो डाउन चल रही, रात को भी कह रही थी डाउन थी, हाँ सुबह गोली दी थी उसने, अच्छा। तो बुखार तो उतर गया था, पर वैसे थकावट है। अरे अब काम से बहुत काम रहते पिलती हैं रहती है, नींद 1 महीने से तो पिल ही रही है ना पूरा। नींद तो नहीं पूरी होती नहीं, फिर। अब 1 महीना हो गया, 12 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख है। आज तो उसका जन्मदिन है तो इसलिए फोन करा है ना। उसके जन्मदिन का क्या करेगी अब, अरे बता रही हूँ मैं वो तो कहाँ पता से है, मैंने होगी। बताया, कह रहे वो सोच रही वही कर रही होगी कुछ बुराई बुराई। हमारी तो टेंशन ले रही होगी। हाँ, उसकी टेंशन ही ले रही थी आज जन्मदिन है। उसको क्या टेंशन होनी है। हो तो जाती है भाई, हो तो घर में। नहीं, उसको क्या टेंशन है बताओ, उसको कोई टेंशन नहीं है। नहीं मुन्नी को कह रही हूँ। मुन्नी को कोई फ़ायदा नहीं है इन टेंशन लेने का, मैं तो बताया था कि आज टेंशन है 11 तारीख ऐसी है। बात नहीं है। क्या करोगे ऐसी टेंशन लेके, बताना, दिमाग ख़राब करने वाली बात है। हाँ एक इंसान जब अपना है नहीं तो उसकी क्या टेंशन लेनी। कितना बड़े बड़े जन्मदिन मनाते थे इसकी खुशी में खूब ना। अब बनाते थे, वो हमारी गलती थी, क्या बनाते थे, हम गलत फहमी, हाँ, तू भी गलत फहमी में थे, हम भी गलत फहमी में थे, क्या ये करें। तो है। मगर भाई अपने घर का बंदा है तो याद तो रहता है ना। अब याद रहता है तो जब गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा भी तो आता है ना। नहीं गुस्सा तो आता है लेकिन अब वो जब भी 11 अक्टूबर है तो क्या इसका जन्मदिन है उसे नहीं तो कोई ऐसे शर्म भी नहीं कैसे। आई, फ़ोन करते हुए शर्म की, फ़ोन किया उन्होंने, गुस्सा नहीं आएगा। मैं कैसे इसके जन्मदिन में भागी भागी दिल्ली से आई, बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके मम्मी की, हाँ, इसका जन्मदिन है। हाँ, और तभी चली गई इसके 15-20 दिनों में ही। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या करूँ, वो इंसान अपना है ही नहीं, वो समझा ही नहीं उसने किसी को कुछ। ऐसे हाँ थोड़ी होता है, कुत्ते बिल्ली भी नहीं करते ऐसे। ये तो सारा दिन काम में लगी रहती है बेचारी, क्या करे। क्या करें बताओ। देखो 2 जने से मिलके काम भी हो जाता था, टेंशन भी नहीं रहती थी अरे किसी उसके ही चीज काम की। इतने करने पड़ते थे, हाँ हाँ उसके कम काम थे क्या। काम तो थे ही। फिर चलो क्या करें अब बताओ। खाली रोटी वोटी। हाँ, खाली इकट्ठे हो गए रोटी खाए हुए। अच्छा। तो अभी अभी पता नहीं कहाँ है वो, ऊपर पूजा करने गई थी, जा रही हूँ। हाँ और अभी लड़का ऊपर है, कहाँ है पता नहीं, अभी दवाई लाया उसकी, अच्छा। जो केमिस्ट से लाया, पवन केमिस्ट जो यहाँ का है। हाँ मैंने हाँ बताया वहाँ चले जा, वहाँ से ले आ। अच्छा तो अभी थकावट की दवाई है कौन सी मुझे तो पता नहीं, कहता है इंजेक्शन लगा दो, कह रही है नहीं इंजेक्शन लगवाना। अच्छा। अब घर में उसको मेडिकल का आता है थोड़ा, इस लड़के को। ताकत का इंजेक्शन लगवा नहीं, लेंगे इसको इससे। मेडिकल के बारे में थोड़ा पता है। हाँ ये हाँ लड़का दूसरा है ना, ये मैं कहीं हाँ। पहले अस्पताल में काम किया है इसने, सारा कह रहा मैं खुद चलाता था। मैं कहती थी मम्मी के पास ताकत के इंजेक्शन लगवा ले इससे 2-4। अरे मुन्नी कहाँ लगवाती है, वो डर रही है इंजेक्शन से, वो तो कह रही गोली खाऊंगी बस। अच्छा। अरे उसको भी साइकोलॉजी हुई है, मतलब वो सीन उसके दिमाग से निकला नहीं है अभी। हाँ हाँ वो मुझे पता है। वो जो दरवाज़ा गिरा ना मेरे ऊपर, वो मुझे कह रही थी मुझे ऐसा था जेल में दबा हुआ है ये, हाँ वो सीन इसके दिमाग में। सील की तरह। और कोई भी वो घुस जाएगा भाई, हाँ किसी भी घुस जाएगा दिमाग में सीन। और क्या। तो अब क्या करें घुसा हुआ हाँ तो यार मेरे को तो रोज़ ही उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, कुछ भी दिखते रहे दिखते हैं तो क्या करूँ। और क्या। क्या करेगा, किस हाथ में थोड़ी है कुछ। और 20 तारीख को जाना तुझे डॉक्टर के यहाँ। 19 को कहा, 20 को, 21 को कहा, तो बाद में भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा। तो देखेंगे कि जिस दिन जाना है, एम्बुलेंस भी चाहिए होती है ना, हाँ एम्बुलेंस में जाना, एम्बुलेंस में आना। और तो क्योंकि गाड़ी में तो जा ही नहीं सकते, जब तक कि पता ना हाँ लगे हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये शायद तो है। 4-5 बार तो जाना ही पड़ेगा उसके पास, हाँ तभी कुछ पता लगेगा। कितनी दिक्कत हो गई है ये भी तो देखना। अब क्या करें, वो तो हाथ में तो है नहीं कुछ। वो तो है ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ दोनों मिलजुल के कर लेते थे तो आधा रोज का हो जाता था मम्मी का भी ना। अब भाई मैं तो कोशिश करता था जितना भी कर सकता हूँ, अपना तो काम कर ही लूँ। मैं तो अपना तो कच्छे कर भी अपने लेना। कच्छे भी धो लेता था मैं तो ऊपर अपने, कभी अपनी कभी। चाय भी अपना पानी भी हाँ, तो अपना मैं तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं वाईफाई। देता था इसको अपने धोने के लिए। हाँ मैंने कहा ये बाबा का इतने को धोते रहते हैं, मेरे को क्या करना धो के। अच्छा। इसके बाबा के बहुत कपड़े होते हैं भाई, हाँ फिर इसके अपने होते हैं। अच्छा। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है, निकालने डालने तो पड़ते ही हैं। हाँ हाँ फिर रात को निकालती है, सुखाती है, 2-3 बजा देती है। अच्छा।
और गणेश चतुर्थी तो बहुत ही देर कर देती है, ये मेरी चाय बनने में लटक जाती है। हाँ, अब क्या करें, ऐसे इसका ऐसे ही रूटीन चल रहा था, मेरा भी ऐसे ही चल रहा था। हाँ, तो मैं तो सुबह कोशिश करता था जितनी जल्दी जल्दी चाय पी के चल दूँ ऊपर, अपना 5-4 घंटे टाइम पास कर दूँ। ठीक है। ये सोचती हूँ कि सो रहा है ऊपर जाके। हाँ, क्या करें, ऐसे लाइफ चल रही थी, वो ख़राब हो गई सारी। सही बात है। अपने हाथ में थोड़ी है कुछ नहीं। अब देखेंगे, अब एंड है ज़िंदगी अपने का। जान के तो करा है कि जान के मारा है अपने, ये तो है नहीं ना। वो है ना, एंड है ज़िंदगी का, क्या पता कैसे निकलता है। हर चीज़ का बहाना होता है। बहाना होता है ना, गेट गिर गया बस बताओ। गिर गया, बहाना हो गया। जब गाड़ी निकली तब कुछ नहीं हुआ। नहीं तब कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही हूँ, तब कुछ नहीं हुआ, तेरे ऊपर ही गिरना था। अरे मुझे संभला ही नहीं। अगर हाँ, समझ जाता तो फिर नहीं गिरता ना। मैं हाँ, देखता हूँ, मैं रोकने पा रहा, रुका ही नहीं उससे। वही तो। मैं भागता भी तो तब भी गिरता मैं उसके नीचे। हाँ, वो होना ही था ऐसा, करना होगा ऊपर वाले ने कुछ। और क्या। लेकिन मेरे को ऑपरेशन के पहले शक्तियाँ मिली वहाँ पे। अच्छा, कौवों की, गायों की और आसमान से काफ़ी एनर्जी मिली। अच्छा, हाँ, ऑपरेशन से पहले अच्छा, बहुत सारे हजारों कौवे मेरे सर पे थे। अच्छा, अच्छा। इधर सारी बहुत सारी काउस थी। हाँ, हाँ, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या एनर्जी आई हैं। मतलब अच्छा, ऑपरेशन पहली बार जैसे हुआ ना, मेरे को महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ है। अच्छा। ऐसे था। चल मैं तो बस फिर चलने लग गया, इतना वाटर लेके ही कर पकड़ के, हाँ जैसे वहाँ चलती थी वाटर से। हाँ। मैं तो ये इलेक्ट्रिक बाथरूम वाकर की तो करने मुझे लगी। लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, थोड़े दिन तो शुरू शुरू में सहारा लेना पड़ेगा ना। देखते हैं क्या कहते हैं वो। और फिर इलेक्ट्रिक बाथरूम चला जाए, अपने उसी कमरे में लेटा रहे बस एकदम। लेटरिन बाथरूम ही है मेन, तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्राइविंग के तो मतलब ही नहीं उठता। नहीं नहीं, उसे छोड़ रहे। तो देखते हैं क्या होता है और वक्त। ऐसे भी इनके भी चलो सामान है, वो तो एक हफ्ते में एक बार ही आता, और रोज थोड़ी आता है। इस सामान का तो ऐसा ना, वो होम डिलीवरी देता नहीं है, तो होम डिलीवरी वाले को जाना ही पड़ता है। जैसे 2-3 आइटम लानी पड़ती है ना, हाँ, तो लानी पड़ेगी ना 2-3 आइटम जो अपना वो तो सामान। कम से कम दुकान वाली दे ही देती है। आटा भी लाना, और बाकी तो दुकान वाली देती है ना, वो तो बिल जाता है उसका और क्या। महीने के महीने। हाँ, कोई बात नहीं, ये अब तो। क्या करें। चल भाभी को अभी शुक्र है कि तू चलने लगेगा, वही बहुत बहुत है। देखते हैं क्या होता है। और क्या। इतना, और इतना टाइम लगा है तो रह और लग जाएगा जाएगा। तेरा सब, फाल कभी वाल कभी सब रह गया। हाँ। अब तो कोई सोच ही मत कहीं काम कभी वाल कभी जाने का। क्या चीज़? अभी तो मेट्रो मेट्रो में कहीं जा नहीं पाएगा थोड़े दिन। अरे मेट्रो में कौन जा रहा है, मैं तो पहले भी कहाँ जा रहा था 3 दिन से। सोच रहा था भाई कहीं चले जा मधु मधु के, लेकिन अब सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। क्या अब करें। तू तो बीमारी पे कह रहे, हम भी कितने कह रहे। नहीं चलो, तुम्हारा तो दूसरा रीज़न है ना आज का, तुम्हारा तो क्रोनिक चीज़ है। हमारा तो इसके पापा की वजह से कह रहे हैं हम। तो वो तो क्रोनिक चीज़ हो गई ना उनका तो। मैं कल इतनी वो हूँ कि मैं फरीदाबाद तेरे को देखने भी नहीं आ पाई। हाँ। फील तो होता है ना। चलो कोई बात नहीं, क्या फिर कोई सभी के साथ है ना ये तो। पप्पी से फिर बात हुई, फिर पप्पी भी को मैंने कह दिया भैया देख ले, वो खुद ही कह रहा है आने जा, कोई आने जा रहा है, मत जा, आने आ रहा, मैं कब करूँगा। हाँ, तो सभी के साथ है, मेरे साथ थोड़ी ना है। और नहीं किसी ने ऐसे फ़ोन तक तो भी नहीं किया, मैं। देखना किसी का भी फ़ोन नहीं आया। हाँ, बस उसी ने लिखा था, राजेश ने फेसबुक पे भी, जल्दी रिकवर हो जाओ, जैसे औरों ने लिखा था। अच्छा, बहुत लोग लिखते रहते हैं। अच्छा, अच्छा। ये मतलब फॉर्मेलिटी ऐसा कर देते हैं, जल्दी रिकवर हो जाओ और क्या। लेकिन हाँ, बाकी तो किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। हाँ। कहते मैं मर जाए जल्दी से। और क्या। नहीं ऐसे तो कोई नहीं अरे सोचेगा। रहने दे, गधे तो पहले फ़ोन करता था, क्यों नहीं कर रहा। हाँ, पहले खुशराम फ़ोन करता था, क्यों नहीं कर रहा। हाँ, सोचना पड़ता है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये इनसे मिले हुए हैं, हाँ, और क्या। उससे मिले हुए हैं ना सब। हाँ, मिलने तो हमारा क्या लेंगे। अरे देखो वो उनकी है कि हमारी नहीं है। बस। अब तो हम पुरानी बात हो गई ना, इतना देर सोचते भी नहीं है। हाँ, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने और क्या। बात ही नहीं की उससे, भाड़ में जा, क्या करना है। हाँ, जैसे उसने कहा ना, मैं वो बोल रही, मैं काट दिया वहाँ में, मुझे क्या लेना हाँ, देना। बताओ। उसको भी झटका लगना चाहिए थोड़ा सा, हम्म, ये मेरी कोई औकात नहीं है। माने नहीं ना ढीठ, जब कहा था छोड़ दे उसको, अभी भी छोड़ दे, नहीं मानी ढीठ। तो मत छोड़ना, हम कब कह रहे हैं छोड़ दे, हम चाहते ही नहीं, तो छोड़, रहे आराम से रहे वहाँ, खत्म बात। हमें क्यों हाँ, याद कर रही है, मत कर याद। चलो, हम भी तो याद करते ही हैं, हम कौन सा भूलते हैं उसको। भाई हम, मैं तो याद नहीं करता, तू करती रहे याद। अभी दिमाग में तो कभी कभी आ ही जाता है भैया, ऐसी वो बात तो नहीं है। वैसे सारी दुनिया का आ जाता है, उसका ही थोड़ी आता है। हाँ, हाँ,
तो किसी का भी आ जाता है। क्या करें, वो ज़िंदगी में जैसा ले धक्का लगना है ना, लगेगा। अब इसको क्या दें कि ज्यादा भाग दौड़ ना करे, लिमिट में कर ले, मम्मी ये तबीयत अब खराब है भाग तो। दौड़ का है ही कुछ, क्या करे अकेली, बताओ, कोई है ही नहीं करने वाला। नहीं, हाँ। जैसे मतलब कि ज्यादा ना करे ना, रेस्ट करे थोड़ा बहुत। अरे मधु, पूजा तो करेगी, कौन करेगा? हाँ। वो देखना, वो तो बीच में सुबह भी करनी है, दिन में भी करनी है, रात में भी करनी है, खाना भी बनाना है, भोग भी लगाना है, वो तो करना ही पड़ेगा ना रात की उसको। पूजा हो गई, उसमें भी टाइम लगता है, ऊपर की भी हो गई। और सुबह सुबह वो भैया पे आ जाती है, फिर नहा के उसके साथ जाती है, क्या वो भी आ जाती है सुबह सुबह, कौन? वही वीआईपी अच्छा, किरण। सुबह आ जाती है वो। संडे को नहीं आती बस। अच्छा, तो अब कोई आ जाता है तो क्या करेगी अकेले, ये भागना पड़ता है इसको भी। तो सुबह हेल्प हो जाती है मेरे ना को थोड़ी हाल बहुत चाल पूछ उसमें। जाती है, रोज़ पूछती है हाल आके वो। अच्छा, बाहर से ही। नहीं, यहाँ यहाँ से कमरे में से, बाहर जाली से। अच्छा, आ जाती है। हाँ, आ जाती है, पूछती है नमस्ते, ये वो कैसा हाल चाल है। मैं चढ़ा देता अच्छा। हूँ वीआईपी, हाँ आ गई वीआईपी। मैंने कहा मारूंगा तेरे को, पड़ के बाद में बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। चलो इतना तो बहुत है, आप तो हाल चाल तो पूछ नहीं, लेती रोज़ है। पूछती है वो आके जब भी आती है। हाँ। बाकी भी पूछती रहती है, लज्जावती है, दूसरी आती रहती है कोई ना कोई। हाँ, तो ठीक है, अब ये तो फॉर्मेलिटी करते हैं ना लोग, और क्या। इतना ही है। चलो, कर ले फिर, काम कोई वाम कर बात। ले, हाँ। अब क्या कर सकते हैं भैया, हम भी नहीं आ सकते, हम रह जाते दो तो चार मैं दिन कब तक। कह रहा हूँ तू आ जा। अरे मैं तो खुद सोच रही हूँ, हम भी नहीं आ सकते। बंटी तो आई यार ना। तो बंटी भी ऐसे ही दो चार दिन ऐसे कह रहे, ऐसे ही घूमता रहे, कभी इधर कभी उधर। अब देख, अब आने बाहर वाले जो कभी। होते हैं ना, अब देख उसने मैसेज भेजा था गुड्डो ने। हैं? अरे मैसेज भेजे जाते हैं क्या, मेरे को बताओ, मैं आऊँ कि नहीं, मैसेज होते हैं इस बात के लिए। कौन कहता है? गुड्डो ने भेजा था ना मैसेज पहले पहले। अच्छा। अरे तुझे आना है तो आ जा, नहीं घुसने देंगे, वापस चली आजकल जाइयो। तो भैया वो बहुत बड़ी हो रही है। हाँ। अच्छा, गुड्डा तो फ्री है ना? नहीं, कहने का मतलब है, तू तो कोई उसको प्यार नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर से वो लिख रही है कि मैं आ जाऊँ। भाई, गुड्डू की तो 3 लड़कियों की शादी हो गई। हाँ। अगर वो चाहती तो 2 4 दिन 5 दिन आके रह ले। तेरा अरे भाई का घर है, अगर तू आएगी तो कोई धक्का तो नहीं देगा। नहीं, परमिशन ऐसे मांग रही है ऐसे भाई, तू परमिशन लेके आता है कोई। हाँ। ठीक है, तो आ जाता, भाई नहीं तेरे घुसने को देंगे थोड़ी वापस। बहुत हेल्प हो जाती है खाना बनाने में, सब्जी काटने में तो। नहीं, वो तो बात ले की लेती। बात है ना। तो जो आने की हैं? हिम्मत तो कर, वो तो बात की बात है ना, वो तो सब। हाँ। भाई क्या करें, नहीं घुसने देंगे ज़्यादा। और क्या। तो मत घुसिए, चले जाइए। तो हाँ। परमिशन मांग रही है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, कौन कह रहा था उसमें माफ़ी मांग गई? हाँ। कौन कह रहा ये तो है ही भैया। है? ये सब ना ड्रामेबाज लोग हैं। अब हाँ, इसका और कोई क्या। क्या जवाब दे, बता मेरे को, क्या जवाब दे अब इसका। इसके पापा बीमार है, अगर ये थोड़े बहुत ठीक होते हैं ना, ये भी वहीं रह लेते। हाँ। उनको तो मैं वहाँ ला भी नहीं सकती हूँ। चल, अब इनकी अब तो एक्सक्लूसिव केस है ना, अब क्या करोगे। क्या करूँ, अम्मा भी जाते थे जब, तो ये रह लिए थे वहाँ एक आध दिन। हाँ। यहाँ भी अकेले रह लेते थे। हम्म। कोमल कर लेती थी इनका। हाँ। अब तो इनका कोई करके राजी नहीं है, तेरे को पता है। हाँ। सब परेशान हो जाते हैं इनसे, मेरे भी भाई। अब भाई वो क्या करे, देखो अकेला आदमी डोमिनेशन में रहा है लाइफ भर। अब वो अपनी नौकरियाँ देखें, वो कहते हैं हम पापा को देखें, ये भी तो है ना। अब वही बात आ जाती है ना, यही तो एग्ज़ाम होता है लाइफ का। हाँ। यही तो एग्ज़ाम होता है ना। हाँ। वही, वो आदमी कितने दिन के लिए है, सवाल ये, तुम तो लाइफ भर जियोगे जियोगे। सारा दिन वो दिमाग में अपनी टेंशन रखते हैं काम की ना। हाँ। अब 4 बजे से कोमल का काम शुरू हो जाता है शाम को। नहीं, वो सब सही बात है, मेरा कहने का मतलब है, ये भी तो सोचना चाहिए ना कि ये आदमी कितने दिन जी लेगा। हाँ। कोई 100 साल तो जिएगा नहीं। और क्या। लेकिन अब बाप तो बाप है भाई। हाँ, वो भी तो कह रही हूँ। जॉब तो चेंज हो जाते हैं, बाप तो चेंज नहीं होता। ना। तो फिर वो भी सोचना चाहिए ना थोड़ा। उसको चाहिए थोड़ी कट से। हैं? मदन को थोड़ा कट से चाहिए, कट से होना चाहिए बस, मेरा सब कोई है पूछने वाला। उसके हाँ। साथ वही कमी है और कुछ नहीं है। और वीडियो कॉलिंग तो रोज करते हैं दोनों बाप बेटी। अब वो वीडियो कॉल अलग चीज़ होती है। हाँ। मैं नहीं करती, मैं तो अपने किचन में लगी रहती हूँ। हाँ। ऐसा वो होता भी है आता है ना, कभी ऐसा होता कभार। है कि हर एक को थोड़ी वैल्यू चाहिए होती है और कुछ नहीं होता। भाई मेरे को कोई कहने वाला तो है, चाहे डांट हो उसको बेशक, लेकिन वो कहते हैं कोई है तो कहने वाला। ये तो है। एक साइकोलॉजी होती है, मतलब और कुछ नहीं होता। हाँ। सारी जॉब है, ठीक है, तुम जॉब करते रहोगे सारी ज़िंदगी, जॉब को थोड़ी कोई कुछ कह रहा है। अब कोमल का सामान खत्म हो रहा है। हाँ। अब उसका ला के देगा बाजार से, हाँ। क्योंकि आज संडे है। हाँ। एक अब ये मैं इसमें सोचा कोई है जैसे संडे को जोक लोग दूंगा। लिखते हैं ना,
जो लिखते हैं कि वृद्ध आश्रम में किन के लोग जाते हैं, इंजीनियर के, डॉक्टर के, प्रोफेसर के, इनके लोग माँ बाप जो होते हैं ना, वो वृद्ध आश्रम में जाते हैं। और जो गरीबों के होते हैं वो घर में रहते हैं। क्योंकि वो कर नहीं पाते ना सेवा। वही बात हो गई ना, तो सेवा नहीं कर पाते तो भगवान की सेवा क्यों करते हो? भगवान ने क्या देना है? हाँ, मंदिर जाके मत्थे क्यों टेकते हो? और क्या। भगवान से ज़्यादा माँ बाप नहीं है? क्यों नहीं है। तो उनकी तो तुम मरने के बाद त्रामी भी करोगे। तुम मरने के बाद सब जिंदे जिंदे में तुमने करनी नहीं है। नंदा बंटी भी करता है इनकी खूब, पता है ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा। अब एक- कल इनका फोन आ रहा था गले में ना, हाँ। तो उन्होंने फोन करके बंटी को फोटो भेजी होगी, हाँ। तो उसने फिर डॉक्टर से पूछा, हाँ। तो जब मेरे डॉक्टर ने तो कोई नहीं, ऐसे घबराने की बात नहीं है, इससे आ जाता है कभी कभी ना, हाँ। गले में स्वेलिंग हो रही है ना, हम्म। चंदा हल्की सी दिखा के लाया था मैं हॉस्पिटल। ऐसा इसलिए है। चेक कराया था गले का भी, ऐसा है मधु। ऑलरेडी है। अभी 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 लड़की और लड़के दोनों सिंगल हैं। हाँ अगर इनकी मैरिज हो गई होती ना, तो हाँ, डिफरेंस आ जाता। वही है तो भाई, थोड़ा फ़र्क है इस चीज़ से। वहाँ इस चीज का फर्क है। कोई आ जाती डोमिनेटिंग तो क्या कर लेगा कोई? इटाली ने जब भी केमिस्ट को फोन करा, हम्म। तो इनकी सारी दवाइयाँ केमिस्ट का लड़का घर लेके गया। हाँ। कह रहा मैं केमिस्ट को फोन कर देता हूँ, वो दवाई देगा, पापा को कोई टेस्ट मत जाना। हाँ। तो ये भी कम निकलने देता नहीं कोरोना की वजह से, हाँ। तो इसलिए फिर वो कल दे गया था दवाई। चलो खैर, वो तो कोई से ऑर्डर करता है, मैंने देखा है। ये मार्केट जाता हुआ डरता है। हाँ, भाई ऐसे कब तक डरोगे? जाना तो पड़ेगा ही। अब ये चश्मा लगा के जाता है, मास्क वास्क सब कुछ लगा के जाता हाँ है। ठीक है, प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी, उसमें क्या बात। और मैं भी लगा के जाती हूँ, मेरे को भी दे रखा है इसमें ऐसा चश्मा। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। डॉक्टर के जाऊंगी तब भी लगा के जाऊंगी। भाई अपने लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये तो जिंदगी में रहेगा लगता है मुझे अभी। अभी तो किसी को पता ही नहीं है मधु इसके बारे में। ये तो वो चीज़ आ गई है, दुनिया आज की तारीख में किसी को कुछ पता नहीं है। इसे ये खाली सब बोले झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, 70-80 कुछ नहीं हो रहा। सब झूठ बोल रहे हैं। 80 केस रोज हो रहे हैं। हाँ। 70-80 हजार केस रोज अरे हो ये रहे हैं। सब फ्रेश झूठ न्यूज़ है, मैं रोज़ देख रहा हूँ। नहीं जो तू बोले सब बकवास है इनकी न्यूज़। और मैं नहीं वो इंदिरा अस्पताल में तो तनख्वाह नहीं दे रहे वो हड़ताल पे आ गए डॉक्टर। जब नहीं दोगे तो आएंगे। रोटी नहीं वो खाए, रोटी नहीं खाए वो। वो कोरोना वाले मरीजों को निकाल दी, दिल्ली के अस्पताल में ले गए। हाँ। दिल्ली सरकार। कल एक वहाँ डॉक्टर का वो एक ड्राइवर मर गया ना एम्बुलेंस का। वो उसने कौन सा? उसने 200 मरीजों को शिफ्ट किया था, जहाँ ये ये क्रियाक्रम करते हैं हाँ, कोरोना के मरीजों को। अच्छा 200 को जब मर गए थे वो लोग, अच्छा तो वो मर गया कल। अच्छा मुसलमान है। अच्छा वो एक सोसाइटी है, फ्री में देती है ये एम्बुलेंस। अच्छा उसमें काम करता था। अच्छा तो 200 मरीजों को लेके, कह रहे बहुत अच्छा आदमी था, और वो खुद भी हो गया उसको कोरोना, अच्छा, और वो मर गया। बताओ। वो कह रही हम तो बर्बाद हो गए घर वाले उसके, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो एक ही कमाने वाला था। वो हाँ, कह रहा था वो तो सारा दिन वहीं रहता था, घर जाता ही नहीं था अपने। हाय अरे हाय, वहीं रहता था एम्बुलेंस सेंटर में, कि मैं घर जाऊंगा तो घर वालों को ना लग जाए। अच्छा ये हाल हो रहा है देख। बोलो। कौन कौन देने वाला है उनको? और इनकी न्यूज़ तक नहीं है, हाँ। न्यूज़ तक नहीं है, ये वाली आपको टीवी आई। अरे टीवी को तो फेंक परे, टीवी की न्यूज़ आती कौन सी? झूठ नहीं आती हैं सब टीवी में। टीवी तो मोदी का टीवी है, कुछ नहीं है टीवी पे भी। वही तो। टीवी तो अब देखो रेप हो रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, पागल वाली बात कर रहे हैं ये। जिसका रेप हुआ उसे गलत कह रहे हैं और बाकी को ठीक कह रहे हैं। अब रेप कह रहे हो, रेप तो हुआ ही नहीं, लड़के के भाई ने जीप काट अब दी ऐसे आदमी दोनों को ने। चक्कू मार देना चाहिए, ऐसे मिनिस्टर को जो बोल बकवास कर रहे हैं ना। तेरी लड़की का होगा तब तो लड़के का रेप करा ले फिर अपने का। हाँ, ऐसे बदतमीज आदमी को यही कहना चाहिए। बताओ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तुम होते कौन है कहने वाले? सही बात है। हुआ है या नहीं हुआ, तुम जज हो क्या? हाँ, कौन हो तुम? बस देख शर्म लिया नहीं आती लोगों को? ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा हुआ कि नहीं हुआ, तुम कौन हो तो कहने वाले? बताओ। इसी बात में बहस कर रहे हैं, बदतमीजी कैसे? हाँ, मतलब राक्षस पना नहीं है ये? ये तो है ही। ये रावण की औलाद है सारे बीजेपी के लोग। हाँ, सब रावण खानदान के हैं ये। सही बात है। क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स बोलते हैं ना, ये अब ये नंबर 1 क्रिमिनल है सारे। और क्या कासवानी है? तो मर गया कल। हाँ। कासवानी अरे तो मर मरने गया। से वो भी कुत्ता था, वो कौन सा बहुत बढ़िया था। बीजेपी का कुत्ता था वो, हाँ, इनडायरेक्ट कुत्ता था वो। पहले का उसमें कुत्ता था, उसकी गवर्नमेंट में सब सब ऐसे ही हैं ये। अब ये लड़की के जो रेप हुआ है, हाँ। जो हाथरस में, हाँ। अब वो बड़ी जाति के लड़के हैं जिन्होंने करा है
वो राजपूत हैं, हाँ, तो उन्हें बचाएंगे ये। अब वो कह रहे हैं कि इन लड़कों ने तो किडनैप नहीं करा, झूठ उनको फंसाया है। तो तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो? हाँ, चीफ मिनिस्टर भी कौन होता है डिसाइड करने वाला? प्राइम मिनिस्टर भी कौन और होता है क्या। डिसाइड करने वाला? करेगा तो कोर्ट करेगा। कह रहे हैं उसकी तो उसमें क्या कहते हैं, मेडिकल में एंट्री नहीं कर रेप हुआ लड़की का। तो मेडिकल में 11 दिन का टाइम क्यों दिया? 96 हाँ, आवर्स मैक्सिमम होता है। ये झूठ बोल रहे हैं सब। अरे ये वो शेड्यूल कास्ट को कुछ समझते नहीं है कि हाँ, मरने दो, ये तो फालतू लोग हैं। वही ना। दलित है ना, हाँ, दलित है, अब तुम करके देखो दलित का काम, पता लग जाएगा। मैं तो चैलेंज करता सही हूँ बात। फेसबुक पे कि हाँ, तू कर, दलित तू पंडित, तू पहले जा, पहले नाली साफ कर, तब बकवास सही करेगा बात मुझसे है। आगे। और ये ब्राह्मण बेचारे बने सिर फिरते हैं। साफ करते हैं, मर जाते हैं। हाँ, सिर साफ करते हैं तो इनको करने दो ना। कितने मर जाते हैं मोदी बेचारे। करे सही और साफ उतर के नाली में, खुद करे और आगे क्या। पहले। वही बकवास तो। कर रहे हैं, पब्लिक को मोदी शिक्षा तो दे रहे हर हैं। तरफ मुद्दा बना रही। ये सब पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। हाँ, ये तुम अपनी लड़की के तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो क्या कहोगे? बताओ। बदतमीजी किसे कहते हैं? अरे हुआ कि नहीं हुआ, तुम कौन होते हो कहने वाले? हाँ, जिसने कहना तो है रात को जलाया क्यों तो चोरी चोरी तो पुलिस की वही तो वजह मैं से। कह रहा हूँ ना। जलाने में कोई वो रात को सारे कोई काम मसला तुम ही होता करो, है। तुम ही क्रिमिनल बन जाओ, तुम ही वकील बन जाओ, तुम ही जज बन जाओ, सब कुछ तुम ही बन जाओ। अब तो ये देखिए, अम्मा मरी थी। हाँ। अम्मा के बंटी पहले पूछने गया था मैं शमशान घाट। हाँ। तो भी रात को जलाते नहीं है ना। हाँ। तो उन्होंने कहा अभी तो टाइम है, ले आओ 7 बजे तक। अरे वो एक अलग बात है, कहने का मतलब तुमने फैमिली की परमिशन के बिना क्यों जलाया? वही तो। सवाल तो ये है ना। हाँ, दिन रात की बात तो बाद में आती है। कुछ तो वो होगा ना भाई, रीजन। तुम होते कौन हो जलाने वाले? मतलब ये है ना, हाँ, फैमिली और जलाएगी तुम क्या। जलाओगे? वही परिवार का नहीं, होके। परिवार जलाएगा ना। तो हाँ, तुम कौन होते हो? पुलिस का क्या फैमिली मतलब ने बीच में आने का? जलाए, नहीं, पुलिस का बीच में आने का वो क्या मतलब जलाए। है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पुलिस कौन होती है जलाने वाली? हाँ, कोई क्रिमिनल था वो? कौन थी वो? और क्या। मिनिस्टर थी वो? क्रिमिनल हो तो भैया उसकी भी लाश दी जाती है परिवार वालों मैं को। वही कह रहा हूँ ना, तो तुम होते कौन हो? तुम्हारा क्या हक है? आतंकवादियों की भी लाश दी जाती है, ऐसी फिर बात थोड़ी है नहीं। फिर फिर तुम्हारा हक नहीं है इसका मतलब तुम चोर हो, डकैत हो, तुम छुपा रहे हो। और मैं कह रही हूँ कि दंगा हो सकता है, इसलिए तो कैसे दंगा होता है, तुम्हें तो पता तो गलत काम हो रहा है तो ना। होने दो ना दंगा, हाँ, होने दो दंगा। तुम काहे के लिए बैठे वही हो? तो। हाँ, अगर दंगा होएगा तो तुम क्या कर रहे हो? सही बात है। कंट्रोल करो दंगे को। ये बकवासबाजी है सब। अब इस टाइम ना कोई न्यूज़ नहीं कह रहे तो सुशांत, टीवी सुशांत रिया आई है। हम्म। अब ये हाथरस की हो गई, मतलब कुछ काम ही नहीं है। अरे ये सब बिके हुए हैं, कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी वाले बदमाशों के बदमाश हैं, इनके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास। और अब मैं बताऊँ जैसे इनके हाल है ना, ये तो जीतते ही रहेंगे, कभी हारेंगे नहीं, देख लिया तो। कुछ नहीं पता, पब्लिक मारेगी इस बार इनको, देखना। पीटेंगी इनको, हाँ, इस बार पीटेगी पब्लिक इनको। क्योंकि इनके हालात ऐसे लगते हैं मशीनें बदलने के। अरे मशीनें बदलेगी, पब्लिक के सामने बदल पाएंगे क्या? हम्म, बिहार में फूकी बैठी है पब्लिक। देखो बिहार का क्या होता है रिजल्ट। चलो देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे। और हमें क्या करना है। हाँ। हमें तो अपने दिल्ली से मतलब। नहीं, दिल्ली से क्या, देश का तो खैर सोचना पड़ता है, दिल्ली खाली नहीं है। मतलब बता रही हूँ मैं तो कि हेरा फेरी इसका है ना जो ना। देखेंगे कितना है, हर चीज़ का एक अंत होता है, इसका भी हो जाएगा अंत। ये हाँ, सारे क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक के दिमाग घुमा दो, कोरोना इनसे संभल नहीं रहा है। बस। तो क्वेश्चन कोई ना करे भाई क्यों नहीं संभल रहा है, तो दिमाग घुमा दो। अरे 3 साल तो लगेंगे जिस स्पीड से अब टेस्ट कर रहे हैं ना। सबसे न्यूज़ ही तो हो गई पता है। हाँ, कोई सबसे न्यूज़ नहीं आती अब। न्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये जिस स्पीड से टेस्ट कर रहे हैं, अभी हाँ, तक 8 करोड़ टेस्ट हुए हैं सिर्फ। अच्छा। जिस स्पीड से टेस्ट कर रहे हैं 3 साल लगेंगे। हमारी ये कोई पब्लिक भी क्वेश्चन तो नहीं कर पहले रहा है, से इनसे ना। मजे की बात तो, ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। हाँ, इस इससे मोदी पहले के ही बच्चे शुरू के हो गए। थप्पड़ मारना चाहिए खींच के, कि हाँ, साला बकवास क्यों कर रहा है, तुझे पता नहीं है तो हम तीन ये तो साल तक है। वेट करते रहेंगे? हाँ, भाग जाते रहे, बस का नहीं है तो। सही बात है। क्यों तो पब्लिक को मरवा रहा है? कभी हवा से कुछ पानी निकाल रहा है, कहीं फालतू बकवास कर रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अरे भूल जा, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को है कोविड। हाँ, कितने मर गए गली में पता भी नहीं है लोगों को। ये तो है। इन बातों को छोड़ो, ये गधा आदमी है एक नंबर का। मैं तो हम्म, इसके मुंह पे मारूंगा, खींच के मेरे सामने आ जाएगा तो तब पड़। ऐसा हाँ, कमीना आदमी है, कोई चिंता ही नहीं है इसको देश के बारे में। ना।
चल ठीक है, कर ले अपना काम। चल ठीक है, अच्छा। ओके ओके। लाता रही हो ट्रेन? हाँ ठीक है। हाँ। Sorry, gentlemen, I delayed your time due to some reason. I'm sorry what to do. Well, I continue about this. Type 1 steel fiber, then type 2 glass fiber reinforcement. Type 1 steel fiber reinforced concrete contains stainless steel, alloy steel, or carbon steel. Fibers conforming to specification of BSEN 148891, ASTM A820/A820M. Type 2 glass fiber reinforced concrete contains alkali resistant air glass fibers conforming to specification C166/C1666M. Then type 3 synthetic fiber reinforced concrete contains synthetic fibers for which documentary evidence can be produced confirming their long-term resistance to deterioration when in contact with moisture and alkalis present in cement paste and substances present in admixture and shall conform to BSEN 14889.2-2. Type 4 natural fiber reinforced concrete contains natural fibers for which documentary evidence can be produced confirming their to deterioration long-term resistance to deterioration and when in contact with moisture and alkalis present in cement paste and substances present in admixtures. This method ASTM 6942 shall be used to determine susceptibility of these fibers to deterioration as a result of exposure to alkalis in concrete. When purchaser chooses to permit use of fibers other than those complying with above classifications, manufacturer or supplier shall show evidence satisfactory to purchaser that type of fiber proposed for use shows long-term resistance to deterioration when in contact with moisture and alkalis present in cement paste and substances present in admixtures. Contract shall submit type of fiber reinforced concrete required, designated size or sizes of coarse aggregate, slump or time of slump or time of flow required at point of delivery where when appropriate point of placement subject to tolerance hereinafter specified slump shall be specified when it is anticipated to be 50 mm or more except as otherwise specifically permitted by engineer cement supplementary cementitious materials fines and coarse aggregates, mixing water and admixtures shall be measured in accordance with the applicable requirements of QCS. Fibers shall be measured by mass. When fibers are to be measured by mass, bags, boxes, or like containers are acceptable provided that such like containers are sealed by fiber manufacturer and have mass contained therein clearly marked. No fraction of container delivered unsealed or left over from previous work shall be used unless weighed. Pre-packaged dry combined material including fibers shall comply with packaging and marking requirements and specification ASTM C387 or C1480 and be accepted for use provided that after addition of water resulting fiber reinforced concrete meets performance requirements of this specification. Batching plant used for preparation of continuously mixed fiber reinforced concrete shall comply with applicable requirements of NRMCA. Fiber reinforced concrete shall be added directly to concrete at time of batching in amounts in accordance with approved submittals for each type of concrete required. Mixed concrete in strict accords with fiber reinforced concrete manufacturers instructions and recommendations. Fiber reinforced concrete shall be free of fiber walls when delivered. Manufacturer of fiber reinforced concrete shall furnish to purchaser a delivery ticket or statement of particulars on which is printed, stamped or written information with details of type, brand and amount of fibers used.
Contractor shall afford inspector all reasonable access without charge for procurement of samples of freshly mixed fiber reinforced concrete at time of placement to determine compliance with requirements of these specifications. Samples of batch mixed fiber reinforced concrete shall be obtained in accordance with practice ASTM C172 RC1385/C 1385M for shotcrete as appropriate, except that wet sieving shall not be permitted. Sampling for uniformity test shall be in accordance with specification ASTM C94/C 94M. If measured slumps, time of flow or time of flow or air content fall outside limits is permitted by this specification, make a check test immediately or another portion of same samples. If results again fall outside permitted limits, material represented by sample fails to meet requirements of this specification. Following shall apply to all forms of fiber reinforced concrete except dry mix shotcrete. When applicable, slump shall be in tolerance with this second para, section para 6425 and B. Time of flow shall be in tolerance as follows. When project specifications for time of flow are written as a minimum or not less than required, specified time of flow is this, let us say plus tolerance. If 15 seconds or less, if more than 15 seconds, so what's given is plus tolerance is 5 seconds. If it's more than 15 seconds, it's 10 seconds. Minus tolerance is 0 second and 0 second. When project specifications for time of flow are not written as a minimum or not less than requirement, tolerance for time of flow is for a specified time of flow. Tolerance is this 8 to 15 seconds plus minus 3 seconds, more than 15 seconds plus minus 5 seconds. Finishability. Pre-project trial shall be utilized to determine acceptable surface finishability by engineer. Manufacturer shall provide services of a qualified technician to instruct concrete supplier in proper batching and mixing of material to be provided. Provide fibers for concrete reinforcing capable of achieving a 2 hours fire resistance rating when tested under ASTME 119 fire test must be certified. So 2 hours fire resistance is very reasonable. So we have to understand what type of concrete we should have. I suppose that if you add 0.5 or 0.25 to 0.5 cubic meter of steel shots into 1 cubic meter of concrete, you can get better result and even more. Lightweight concrete is, I have many times talked about this this heavy duty concrete, heavyweight concrete, and you can analyze yourself because steel density is 7835 kilogram per meter cube. Concrete density is 2500-2400 gram per meter. So one side is 2.4, 1.5 we have to take for 1 cubic meter of dry materials. If we say we add 0.5 cubic meter, this means only 1 cubic meter dry material is left for remaining parts. So that is much better, very much heavier you can say. If you add 0.5 means you have to add, you are going to add 3,500 something or more to that. So you can design your concrete that way. Steel shot is very excellent material which can be used for purpose of increasing density of concrete or the high density concrete, and it's generally used where radiation size is high radiation concrete you can call it. Lightweight concrete, now we are going to discuss something in reverse direction. It was heavyweight concrete, now it's lightweight concrete. This clause of specification refers to lightweight concrete with improved insulation properties. You may say it is foam concrete, where practical range of density is between about 300 and 1850 kg per meter cube. So 300 is, you can say, 1/8 of ordinary concrete, and it's 1850, which you can say about 70% of that. So required density and strength of lightweight concrete shall be specified on drawings or directed by engineer. Method of production of lightweight concrete shall be shown on drawings or directed by engineer. Concrete shall submit full technical details of materials and method of production.
for lightweight concrete along with a list of previous projects where particular system was used or has been used. After source approval of material and system, contractor shall submit a mixed design for lightweight concrete for approval of engineer. After review and approval of mixed theoretical mixed design, contractor shall carry out a trial mix to check workability of fresh concrete and to allow samples to be made for compressive strength and density. Engineer may also instruct that tests are carried out for abrasion resistance and thermal insulation properties. Lightweight concrete shall be made with lightweight aggregates as approved in Part 2 of Section 5 of this for use in concrete. Performance of lightweight concrete shall follow ACI 213R. Trial mixes. Trial mixes. Uh, as soon as engineer has approved the concrete mix design for each grade of concrete, during or following carrying out of preliminary tests, the contractor shall prepare a trial mix of each grade in presence of engineer at least 35 days before commencement of concreting. Trial mix should be mixed and handled by means of same plant which contractor proposes to use in works. Trial mix shall comprise not less than 50% from central mixing drum capacity but not less than 3 meter cube of concrete. Trial mix can be exempted if concrete supplier provides through an independent approved testing agency adequate history on strength. No less than 30 strength test results as para 6.6 of this specs. Results shall be valid by no more than 6 months from date of approval. Batch field concrete trial mixture with -5 degrees of proposed maximum allowable fresh concrete temperature in a truck mixer with a minimum batch size of 3 meter cube. Concrete mix shall be held in mixer for 120 minutes unless otherwise specified by engineer. During entire 120-minute period, agitate mixer at 1 to 6 rpm. At end of 120 minutes, mix concrete mixture at full mixing speed designated by manufacturer, which is 6 to 18 rpm for 2 minutes. For each trial mix, a plant production trials shall be carried out and slump of concrete checked immediately after discharge from mixture and thereafter at 30-minute interval up to maximum time period envisaged for delivery and standing on site. Based on this trial, mix design shall identify whatever adjustment to range of plasticizers for acceptable workability for different times after batching. Where ready-mix concrete is being used, above requirement may be waived at discretion of engineer. If contractor has documented previous experience of a particular mix design with test results available. Proportions of cement, aggregate and water shall be carefully determined by weight in accordance with contractor's approved mix design or modified mix design after preliminary tests. Each sample shall consist of at least 9 specimens for strength analysis, where 3 specimens for each age shall be tested to determine concrete strength at required age. If either or both average value of strength of 3 cubes tested at 28 day is less than required strength, target strength, or difference between greatest and least strength is more than 15% of average strength. For BSEN 206-1, contractor shall take measures as deemed necessary, such as propose new mix design, provide new materials, and prepare and test further trial mixes
until specified requirements are achieved. Additionally, contractors shall measure temperature, workability of concrete in each batch. When required by engineer, a mock-up of 2 meter cube shall be made at job site, and full-scale tests of workability of each trial mix shall be made by contractor in presence of engineer. Following tests shall be made on site by filling trial molds to confirm suitability of mix for works, types of plants used for mixing, face intended for use in works, type of foam oil, type of protective coatings, redesign of concrete mixes and trial mixes of concrete shall be repeated for each grade of concrete until concrete meets requirements in this specification and it is verified by full scale mock-up test as described above. Approval of job mix proportions by engineer or his assistants to contractor in establishing those proportions in no way relieves contractor of responsibility of producing concrete which meets requirements of this specification. All costs connected with preparations of trial mixes and design of job mixes shall be borne by contractor. Contractor shall declare whatever change in source of material and whatever changes in cement content consumption greater than 20 kg per meter cube from that used in trial mixes. Quality and testing. In order to ensure the quality of materials and mixer proportions are maintained throughout concreting operations, sampling and testing shall be carried out using relevant standard procedures and all other relevant codes quoted in this specification in accordance with a routine testing program that shall be agreed with engineer before start of concrete work. Contractor through a third party approved testing laboratory or agency shall apply necessary tools for tests such shall cast all concrete specimens, strip and store them in water as stated in BSEN 12390-2. Contractor shall also arrange for transport of samples to place of testing and supply engineer with duplicate copies of all test certificates. Tests for concrete, unless engineer directs otherwise. Program shall include at least tests specified below. Tests on aggregate shall be described in part 2 of this section. Concrete shall be tested in accordance with requirements of this specification by qualified field testing technicians or engineer. Concrete testing laboratory personnel shall be certified from a recognized institution. Field personnel in charge of sampling concrete, testing for slump and temperature, and making and curing test specimens shall be certified from a recognized institution too. Slump test and VSI testing when applicable be carried out at rate of one test per load of concrete delivered to site or one test per 10 meter cube, whichever is lesser, for first 50 meter cube of concrete, then at rate of one slump test for every 50 meter cube if concrete was consistent during production. In event of inconsistent slump values, engineer may instruct the contractor to check slump test on each truck of concrete at a plant. Contractor shall carry out investigation to establish cause of variation high variation in slump and take necessary corrective measures. Slump requirements for fresh concrete are to be approved by engineer. Adjustment for a slump of a concrete to fit a job requirement can be conducted only one time using a proper additive at the job site. That such addition does not increase
water cement ratio, and setting time above maximum permitted by specifications. This addition will only be made at approval of engineer. Concrete shall be available within permissible range of slump for a period of 30 minutes starting either on arrival at job site or after initial slump adjustment permitted above, whichever is later. First and last quarter meter cube discharge are exempt from this requirement. If user is unprepared for discharge of concrete from vehicle, producer shall not be responsible for a limitation in a minimum slump after 30 minutes have elapsed starting either on arrival of vehicle at a prescribed destination or at requested delivery time, whichever is later. I repeat this paragraph. Concrete shall be available within permissible range of slump for a period of 30 minutes starting either on arrival at job site or after initial slump adjustment as permitted above, whichever is later. First and the last quarter meter cube First and the last quarter meter cube discharge are exempt from this requirement. If a user is unprepared for discharge of concrete from vehicle, producer shall not be responsible for a limitation of minimum slump after 30 minutes have, have elapsed starting either on arrival of vehicle at the prescribed destination or at requested delivery time, whichever is later. When air entrained concrete is desired, purchaser purchaser shall specify total air content of concrete. Air content of air entrained concrete when sampled from transportation unit at the point of discharge shall be within tolerance of plus minus 1.5% of specified value. Concrete strength test. Each concrete strength sample shall consist of at least 7 specimens, 2 to be tested at 7 days, 3 at 28 days, and 2 to be tested at discretion of engineer. Additional samples may be prepared as directed by engineer to be tested at the discretion of engineer for strength and or durability. When concrete cylinders have been specified, concrete specimen shall not be capped using sulfur for environment effect. Contractor shall follow one of following procedures and as approved by engineer. Cap specimen in accordance with ASTM C617 using neat cement paste and high strength gypsum cement paste. Socket and grind surface of concrete to desired plainness and perpendicular. Test concrete cylinders using unbonded caps in accordance with ASTM C1231. For a field specimen, contractor has right to either use conversion listed in 206 or determine conversion factor for each specified concrete mix design by testing at least 36 comparative specimens, that is 18 cubes versus 18 cylinders, samples from 3 consecutive batch trial mix. I repeat this procedure because this is core testing. So when concrete cylinders have been specified, concrete specimens shall not be capped using sulfur or environmental effect. Now sulfur capping is not permitted. Contractor shall follow one of following procedures and per approval by engineer. Cap specimen in accordance with ASTM C617 using neat cement paste and or high strength gypsum cement paste. Socket and grind surface of concrete to desired plainness and perpendicular.
Test the concrete cylinders using unbounded caps in accordance with ASTM C1231. For field specimen, contractor has right to either use conversion listed in EN 206 or determine conversion factor for each specified concrete mix design by testing at least 36 comparative specimens, that's 18 cubes versus 18 cylinders sampled from 3 consecutive batch trial mix. A minimum of one sample shall be taken of each mix every day mix is used. Sample shall be taken at average rate of following: one sample every 30 meter cube if pour is less than or equal to 90 cubic meter. One sample every 100 meter cube if pour is greater than 90 meter cube and equal to or less than 2000 meter cube. One sample every 200 meter cube if pour exceeds 2000 meter cube. Test specimen for compressive strength testing shall be prepared and cured in accordance with BSEN 12390-2. Compressive strength of specimen shall be determined in accordance with BSEN 12390-3. A test shall be average of strength of a specimen tested at age specified. If a specimen shows definite evidence other than low strength of improper sampling, molding, handling, curing, or testing, it shall be discarded, and the strength of remaining cubes shall then be considered test result. Identity criteria of concrete strength shall be assessed for each individual test result and average of non-overlapping results for BSEN 2061 and explained below. Average strength test average of two specimens or more shall be equal to or greater than characteristic strength FCK plus 2 MPa, and whatever individual test results shall be equal to or greater than FCK minus 4 MPa. Test result shall be that obtained from average of results of two or more specimens made from one sample for testing at same age. If works test specimen failed at 28 days, contractor shall suspend concreting operations and not proceed further without approval. Contractor shall carry out in situ testing of suspect concrete in accordance with Part 13 of this section. In presence of engineer, defective work shall be replaced and retested to satisfaction of engineer. Then harden test for fiber reinforced concrete. When post-crack flexural performance is used as basis for acceptance of fiber reinforced concrete, make a condition and test the sets of test specimen in accordance with test method ASTM C1399, C1550 or C1609 oblique C1609 as specified. पानी दो थोड़ा. When flexural strength is used as basis for acceptance, make and test the sets of at least 3 test specimens in accordance with requirements for sampling and conditioning given in test method ASTM C1609 oblique C1609M. Test specimens representing 10 sections as defined in C1609, C1609M, or specimens representing fiber reinforced circuit of whatever thickness shall be tested per cast placed without being turned on their sides before placement on supporting system. Acceptance shall not be based on fractional strength alone, and post-crack performance is important.
Acceptance shall not be based on flexural strength alone when post-crack performance is important. Test method C1609/C1609M provides for determination of first peak of flexural strength when required by purchaser. For many type amount fiber combinations, first peak flexural strength is not significantly greater than peak strength in flexure. When compressive strength is used as part of basis for acceptance of fiber reinforced concrete, make sets of at least two test specimens in accordance with applicable requirements of practices. ASTM C31/C31M and C192/C192M, and as specified in this section of test methods C42/C42M or C1604/C1604M, and condition and test in accordance with test methods BSEN 12390, C39/C39M, C42/C42M or 1604/C1604M. Acceptance shall not be based on compressive strength alone. Frequency of test of hardened fiber reinforced concrete shall be in accordance with following requirements. Batch mixing. Tests shall be made with same frequency as in conventional concrete. Each test shall be made from a separate batch. On each day, fiber reinforced concrete is mixed. At least one test shall be made for each class of material. When fibers are added, subject for approval of engineer at the truck mixer, tests shall be made for each 20 meter cube or fraction thereof, or whenever significant changes have been made in proportioning controls. On each day fiber reinforced concrete is mixed, at least one test shall be made for each class of material. For shotcrete, tests shall be made for each 38 meter cube placed using specimens sawed or cored from structure or from corresponding test panels prepared in accordance with practice ASTM C1604 and C1140. On each day, fiber reinforced shotcrete is prepared. At least one test shall be made for each class of material. Quality control charts. Contractor shall submit a continuous statistical analysis on a monthly basis for strength showing potential strength of concrete. Variations in measured strength by determining standard deviation margin, batch to batch variations of proportions and characteristics of constituent materials in concrete, production, delivery and handling process, and climatic conditions and variations of sampling, specimen preparation, curing and testing procedures. Within tests, contractor shall provide in its analysis main strength, calculated standard deviation, normal distribution of concrete strength and frequency histograms. Contractor shall draw upper and lower lines for Warnington line. Target mean strength plus minus 2 into standard deviation. And control line, target mean strength plus minus 3 into standard deviation. Contractor shall use methods of computing standard deviation with coefficient of variation and factors to compute within test standard deviation from range addressed in XCI 214. This recalculated margin, if adopted by engineer, becomes current margin for judgment of compliance with specified characteristic strength of concrete. Works test cubes. Test cubes shall be taken as specified from fresh mixed concrete which is being used in works and which has been prepared in normal way. Cubes shall be numbered sequentially and marked time, date and name of individual, section of work from which samples are taken, mix reference and delivery note number, name of technician
and whatever other relevant information. Test for slump per BSEN 123502 and temperature shall be made and recorded whenever samples are taken. Cube manufacturer shall be in accordance with BS. Cube manufacturer shall be in accordance with BSEN 123902. When self-compacting concrete is used, concrete specimen shall not be consolidated in molds and it shall be placed in a single lift, then leveled with minimum manipulation. All samples shall be molded at job site on a level surface area to within 20 mm per meter. Immediately after molding and finishing, a specimen shall be stored for a period up to 48 hours in a temperature range from 20 to 26 degrees Celsius and an environment preventing moisture loss from specimen. A specimen shall not be transported or handled until at least 14 hours after casting. Transportation time from site to laboratory for final curing and strength testing shall not exceed 4 hours. A specimen shall be protected from direct sun or rapid evaporation and placed on cushion layer to reduce vibration. Rejection of concrete mixes. Rejection of concrete mixes. Concrete mixes shall be rejected if they fail to meet one of more requirements which cannot be brought into compliance as related to whatever of following. Improper class or grade of concrete, slump or temperature not within specified limits, oversized aggregate, maximum water cementitious ratio is exceeded. Concrete shall not be rejected unless it has been visually inspected by engineer or representative. So what are 4 points here? Improper class or grade of concrete, slump or temperature not within specified limits, or oversized aggregate, the maximum water cementitious ratio is exceeded. Concrete shall not be rejected unless it has been visually inspected by engineer or representative. Unsatisfactory concrete work. A test shall be average of strengths of specimens tested at age specified. If a specimen shows definite evidence other than low strength of improper sampling, molding, handling, curing or testing, it shall be discarded and strength of remaining specimen shall then be considered. Test result and where range of test values is more than 15% of mean, results shall be disregarded. Once again I say this, it shall be discarded and strength of remaining specimens shall then be considered. Test results and where range of test values is more than 15% of mean, results shall be disregarded unless an investigation reveals an acceptable reason to justify disregarding an individual test value. To conform to requirements of this specification, strength tests representing each class of concrete must meet following requirements. What is this? What is average of whatever 3 consecutive strength tests shall be equal to or greater than specified strength F-C, and when specified strength is 35 MPa or less, no individual strength test average of at least 2 specimen tests shall be more than 3.5 MPa below specified strength F-C. When specified strength is greater than 35 MPa, no individual strength test average of 2 specimen tests shall be less than 0.9 F-C. Should whatever of test results be unsatisfactory, engineer may order work to be stopped pending further instructions. Executed work for which test results are unsatisfactory shall be liable to rejection, and if so advised, work shall be rebuilt
at contractor's expense. In case of 7-day work cube test proving unsatisfactory, work may be stopped, liable to rejection, pending result of 28-day test. If test results fail to comply with requirements, work represented shall be immediately liable to rejection. Cost of all such cuttings, preparation of specimen, transportation and testing, and of making good portions of structure affected shall be borne by contractor. Regardless of satisfactory test cube results, concrete work which in engineer's opinion is excessively honeycombed or in whatever other way is defective shall be liable to rejection. Minor defects apparent on stepping formwork must be made good at contractor's expense. No such repair work shall be carried out until after inspection by engineer is done and his acceptance of proposed treatment has been given. Work which has not been previously inspected but which shows signs of such treatment shall be liable to be rejected as defective work. Cost of all delays on site due to faulty concrete work shall be met by contractor. Concrete plant we are going to talk. Here, scope, reference, batching, journal, plant type, bins and weight, batchers, tolerances of measuring equipment, batching, tolerance, charging, mixing, charging concrete materials, mixing, time for stationary mixers, mixing, limitation of water, cement ratio, ready mix concrete, journal, Appendix A, concrete plant inspection checklist. Concrete plant. This part covers batching and mixing of concrete together with inspection of concrete plant. What section that are related to this are general aggregate, cementitious materials, water and mixtures property requirements, transporting and placing of concrete, hot water, concreting miscellaneous, and references are ACI 304 guides for measuring, mixing, transporting and placing concrete, ASTM C 94 specification for ready mix concrete, BS 1881 testing concrete, BS 8500 concrete specification complementary to EN 206, BS EN 12390 testing of hardened concrete, BS EN 12390-1 2000 testing hardened concrete part 1, shape, dimensions and other requirements for specimen and molds, BSEN 12390-2000 testing hardened concrete part 2, making and curing a specimen for strength test, BSEN 12390-3 2000 testing hardened concrete part 3, compressive strength of test specimens, BSEN 12390-4 2000 testing hardened concrete part 4, compressive strength specifications for testing machines, BSEN 12390-5 2000 testing hardened concrete part 5, fractural strength of test specimen, BSEN 12390-6 2000 testing hardened concrete part 6, tensile splitting strength of testing specimen, BSEN 12390-7 2000 testing hardened concrete part 7, density of hardened concrete, BSEN 12390-2000 testing hardened concrete part 8, depth of penetration of water under pressure, BSEN 12350 testing fresh concrete, BSEN 1350-1 2000 testing fresh concrete part 1 sampling, BSEN 12350-2 2000 testing fresh concrete part 2 slump test, BSEN 12350-3 2000 testing fresh concrete part 3 wavy test, BSEN 12350-4 2000 testing fresh concrete part 4 degree of compatibility,
BSEN 12350-5 testing fresh concrete part 5 flow table test. BSEN 12350-6 2000 testing fresh concrete part 6 density. BSEN 12350-7 2000 testing fresh concrete part 7 air content pressure methods. GSOEN 206-1 concrete specification of performance, production and conformity. GSSF for Gulf State Organization. GSO ISO 1920-1 testing of concrete part 1 sampling of fresh concrete. GSO ISO 1920-2 testing of concrete part 2 properties of fresh concrete. GSO ISO 1920-3 testing of concrete part 3 making and curing test specimen. GSO 1 ISO 1920-4 testing of concrete part 4 strength of hardened concrete. GSO ISO 1920-5 testing of concrete part 5 properties hardened concrete after other than strength. GSO ISO 1920-6 testing of concrete part 6 sampling, preparing and testing of concrete core. GSO ISO 1920-7 testing of concrete part 7 non-destructive test on hardened concrete. ISO 1920-8 testing of concrete part 8 and determination of dry shrinkage of concrete for sampling prepared in field in laboratory. ISO 1920-9 testing of concrete part 9 determination of creep of concrete slenders in compression. ISO 1920-10 testing of concrete part 10 determination of static modulus of elasticity in compression. Now batching. During measurement operations, aggregates shall be handled in a manner to maintain their desired grading, and all materials shall be weighed to tolerances required for desired reproducibility of selected concrete mix. Coarse aggregates shall be controlled to minimize segregation and undesired undersized material. Fine aggregates shall be controlled to minimize variations in gradation, giving special attention to keeping finer fractions uniform and exercising care to avoid excessive removal of fine during processing. Avoid blending two sides of fine aggregate by placing alternate amount of bins or stockpiling or when loading cars or trucks. Satisfactory results are achieved when different size fractions are blended as they flow into stream from regulating gates or feeders. A more reliable method of control for a wide range of plant and job conditions, however, is to separate storage, handling, and batching of coarse and fine fractions. Concrete plants continue. Stockpiling of coarse aggregates shall be kept to a minimum because fines tend to settle and accumulate. When stockpiling is necessary, use of correct method minimizes problems with fines, segregation, aggregate breakage, excessive variation in gradation, and contamination. Stockpile shall be built up in horizontal or gently sloping layers, not by end dumping. Trucks, loaders, and dozers or other equipment shall not be operated on stockpiles because, in addition to breaking aggregate, they frequently track dirt onto piles. Stockpiles located to prevent contamination, arranged to assure that each aggregate as removed from its stockpile is distinct and not intermingled with others. Concrete supplier is asked to separate storage bins or compartments for each size and type of aggregate, properly constructed and charged to prevent mixing of different size of types. Sequencing and blending of ingredients during charging or mixture shall be carried out in such a way as to obtain uniformity and homogeneity
in concrete produced as indicated by such physical properties as unit weight, slump, air content, strength, and air-free mortar. Content in successive batches of same mix proportions and as stated in STM C94 Annex A. Mix recipe for mixes to be produced shall be readily available to mixture operator. Only authorized personnel shall be allowed to make changes to mix design. All cement bags shall be stored in weather-tight, properly ventilated structure to prevent absorption of moisture. Storage facilities for bulk cement shall include separate compartment for each type of cement used. Interior of cement silo shall be smooth with a minimum bottom slope of 50 degrees from horizontal for a circular silo and 55 to 60 degrees for a rectangular silo. Silos shall be equipped with non-clogging air for diffuser flow pads through which small quantities of dry, oil-free, low-pressure air can be introduced intermittently at approximately 3 to 5 psi or 20 to 35 kPa to loosen cement that has settled tightly in silos. Storage silos shall be drawn down frequently, preferably once per month, to prevent cement caking. Each bin compartment from which cement is batched shall include a separate gate, screw conveyor, air slide, rotary feeder, or other conveyance that effectively allows both constant flow and precise cut off to obtain accurate batching of cement. Fly ash, ground slag, or other pozzolanas be handled, conveyed, and stored in same manner as cement. Bins, however, shall be completely separate from cement bins without common walls that could allow material to leak into cement bins. All bins and silos shall be properly tagged at silos, bins, and near charging hose. Bags of cement should be stacked on pallets or similar platforms to permit proper circulation of air. For storage period of less than 60 days, stacked bags no higher than 14 layers and for longer periods no higher than 7 layers. Water, batcher, and water pipes should be leak free. If ice is used, ice facilities including equipment for batching and transporting to mixture should be properly insulated to prevent ice from melting before it is in mixer. Plant type. Manual control batching. Manual plants are acceptable for small jobs having low batching rate requirements. Generally, for jobs up to a total concrete quantity of 1000 meter cube and 10 meter cube per hour. Semi-automatic control batching. In this system, aggregate bin gates for charging batchers are opened by manually operating push buttons or switches. Gates are closed automatically when designated weight of material has been delivered. Automatic control batching. Automatic batching of all materials is electrically activated by a single starter switch. However, interlock shall interrupt batching cycle when scale has not returned to plus minus 0.3% of zero balance or when weighing tolerances detailed in clause 725 of this part are exceeded. Bins and weight batching.
Batch plant bins shall be of sufficient size to effectively accommodate production capacity of plant. Compartments in bins separate various concrete materials, and shape and arrangement of aggregate bins shall prevent aggregate segregation and leakage. Weight batchers shall be charged with easy operating clamshell or undercut radial type bin gates. Gates used to charge semi-automatic and fully automatic batchers shall be power operated and equipped with suitable in-flight correction to obtain desired weighing accuracy. They shall be calibrated by plant supplier for type of aggregate used at standard range of moisture contents. Weigh-watchers shall be accessible. Weigh-watchers shall be accessible for obtaining representative samples, and they shall be arranged to obtain proper sequencing and blending of aggregates during charging of mixture. Amount of concrete mixed in whatever one batch shall not exceed rated capacity of mixer. All mixing and batching plants shall be maintained free of set concrete or cement and shall be cleaned before commencing mixing. For each different type of cement at use at plant, a separate silo shall be provided. Tolerance of measuring equipment. Scales for weighing concrete ingredients shall be accurate when in use within plus minus 3% and plus minus 1.45% for additives. Standard test weights shall be available to permit checking of scale accuracy. Testing of weighers shall be 3 months intervals. Shall be at 3 months intervals. If water is dispensed by flow meter, frequency of testing shall be at 3-month interval. Such tests shall be undertaken by a calibration company approved by Central Materials Laboratory and calibrated to recognized international standards. Test certificates shall be displayed in plant in prominent positions. Batching tolerances. कोई है मुन्नी? Operations of batching equipment shall be such that concrete ingredients are consistently measured within following tolerances. Plants shall have ability to flag values that are outside these limits. Operators shall make manual adjustments to batching and final weight shall be within given limits stated in Table 7.1. Adjustments shall be displayed on batch weigh printouts. Cementitious material shall be measured by mass. When supplementary cementitious metals are used in concrete mixtures, cumulative mass is permitted to be measured with hydraulic cement, but in batch, hopper, and on a scale which is separate and distinct from those used for other materials. Aggregate shall be measured by mass. Batch mass measurements shall be based on dry materials and shall be required masses of dry materials plus total mass of moisture, both absorbed and surface contained in aggregate. Mixing water shall consist of water added to batch, ice added to batch, water occurring as surface moisture on aggregates, and water introduced in form of admixtures.
Added water shall be measured by weight or volume. Added ice shall be measured by weight. In case of truck mixers, wash wash water retained in drum for use in next batch of concrete shall be accurately measured. If this proves impractical or impossible, wash water shall be discharged prior to लोडिंग नेक्स्ट बैच ऑफ कंक्रीट. लाइट नहीं है, पंखा बंद कर देना, बहुत देर चल रहा है. लाइट नहीं, लाइट गई हुई है, 1 घंटा हो गया. Chemical admixtures in powdered form shall be measured by mass. Liquid chemical admixture shall be batched in mass or volume. Table 7.1 Typical batching tolerance ingredients. Typical batching tolerance ingredients: batch weights greater than 30% of skill capacity, batch weighs less than 30% of skill capacities. In batch weighs greater than 30% skill capacity, individual batching, cumulative batching. Batch weighs less than 30% of skill capacity, individual batching, cumulative batching. Then cement and other cementitious materials. Then water by volume or weight, aggregate percentage, admixtures. Let us say cement and other cementitious materials. In this, which is batch weighs greater than 30% of skill capacity, individual batching plus minus 1% of required mass or plus minus 0.3% of skill capacity, whichever is greater. And in 30% of skill capacity less than that, individual batching, that is not less than required weight or 4% more than required weight. Water by volume or weight percentages plus minus 1 not recommended. Individual batching plus minus 1 not recommended. Then aggregate percentages plus minus 2 and not recommended. And then plus minus 1 in cumulative batching. Individual batching plus minus 2 and cumulative batches plus minus 0.3% of scale capacity or plus minus 3% of required cumulative weight, whichever is less. Admixtures by volume or weight percentage plus minus 3 not recommended, plus minus 3 not recommended. Cement supplied in bag shall be placed directly from bag into intake of mixing plant, and each batch must contain one or more complete bags of cement. No mixture having rated capacity of less than one batch shall be used, and mixer shall not be charged in excess of its rated capacity. Charging mixer. Each batch shall be so charged into mixer that some of water shall enter in advance to cement and aggregate. Control shall be provided to prevent batched ingredients from entering mixer before previous batch has been completely discharged. Batch First batch of concrete through mixer shall contain an excess of cement to allow for coating of inside of mixing drum without reducing required mortar content of mixing plant that has been out of action for more than 30 minutes shall be thoroughly cleaned before whatever fresh concrete is mixed in that. When a change of mix is made to one using a different type of cement, mixing plant shall be thoroughly cleaned of all traces of previous used cement, whatever is time interval between successive mixing. Charging concrete materials. Water shall enter mixer first with continuous flow while other ingredients are entering mixer. Water charging pipes must be of proper design
and of sufficient size so that water enters at a point well inside mixer and charging is completed within first 25% of prescribed mixing time, and where concrete uniformity shall be verified by approved inspector. Admixture shall be charged to mixer in accordance with instructions of manufacturer. Automatic dispensers shall be used. Mixing time for stationary mixers. Mixing time required shall be based upon ability of mixer to produce uniform, homogeneous, consistent mixture throughout batch and from batch to batch. बुखार ज़्यादा हो रहा है। हाँ 101 बुखार हो रहा है। अच्छा लेटी हुई है लेटी हुई है लेटी है अभी, चार टेबलेट दी है। अच्छा बढ़ गया क्या हुआ इधर की लाइट जला लो ना इधर की एक मैं देखिए एक सेकंड Mixing time required shall be based upon ability of mixer to produce uniform, homogeneous, consistent mixture throughout batch and from batch to batch. Final mixing time shall be based on results of mixture performance tests made at start of project and time fixed unless a change is authorized by engineer. Time shall, however, not be less than 60 seconds unless otherwise verified as stated hereinafter, where no mixer performance tests are made. बंद कर दो। हाँ कर दो लाइट बंद है। हवा ले लिया। आधा घंटा बना देंगे। कोई नहीं है वो करने का रेस्ट थोड़ा सा Time shall, however, not be less than 60 seconds unless otherwise verified as stated earlier. I repeat this. Final mixing time shall be based on results of mixer performance tests made at start of project and time fixed unless a change is authorized by engineer. Time shall, however, not be less than 60 seconds unless otherwise verified as stated hereafter. Where no mixer performance tests are made, acceptable mixing time for mixers having capacities of 0.75 meter cube or less shall be not less than 1 minute. For mixers of greater capacity, this minimum shall be increased 15 seconds for each cubic meter or fraction thereof additional capacity. Where where mixed performance tests have been made on given concrete mixtures in accordance with testing programs ASTM C94, Annex A and NRMCA certification and mixtures have been charged to their rated capacity. Acceptable mixing time is permitted to be reduced for those particular circumstances to a point at which satisfactory mixing defined in STM C94 and NRMCA certification for central mixing plants shall have been accomplished. When mixing time is so reduced, maximum time of mixing shall not exceed this reduced time by more than 60 seconds for air entry in concrete. Mixing time shall be measured from time all ingredients are in mixer. Batch mixers with audible indicators used in combination with interlocks which prevent mixer discharge prior to completion of a preset mixing time shall be provided on automatic plants and are also desirable on manual plants. Mixer shall be designed for starting and stopping under full load. Mixing. All structural concrete to be placed in situ
shall be manufactured in a computer controlled batching plant of types described in clause 722 of this part. Plant shall be complete with suitable water chilling or ice making facilities, or both, to ensure concrete temperatures are maintained as specified in Part 6 and 15 of this section. Concrete shall be mixed in batches in plant capable of combining aggregates, cement and water, including admixtures, if whatever, into a mixture of uniform color and consistency, and of discharging mixture without segregation. Automatic moisture content probes set in hoppers shall be used to continuously determine moisture content of aggregates. Contractor shall make due allowance for water content in aggregates when determining quantity of water to be added to each mix. Amount of water added to each mix shall be adjusted to maintain constant approved water cement ratio of mixed concrete. Limitations of water cement ratio: no concrete shall exceed water cement ratio as given in part 6 of this section. Quantity of water used in mixing shall be least amount that produce a workable homogeneous plastic mixture which can be worked into forms and around reinforcement. Excess water over maximum allowed by mixed design shall not be permitted, and whatever batch containing such excess shall be rejected. Ready mix concrete. Oh, sorry. Ready mix concrete. Manufacture of ready-mix concrete (RMC) for use in government projects may only be carried out in batching plants that have an approval certificate issued by Central Materials Laboratory. When this certificate is under renewal process by ready-mix concrete manufacturer, other certificates such as NRMCA shall be considered by engineer as approval on uniformity and consistency of facility. Engineer may request to revalidate uniformity test under supervision. In addition, use of ready-mix concrete in whatever part of work shall require engineer's written approval. Contract shall satisfy engineer on following: materials used in ready-mix concrete comply with specifications in all respects. Manufacturing and delivery resources of proposed suppliers are adequate to ensure proper and timely completion. Specified requirements as to sampling, trial mixing, testing, and quality of concrete of various grades, as described in Part 6 of this section, shall apply equally to ready-mix concrete. Every additional facility, including but not limited to testing equipment, laboratory facility, and transport, which engineer or persons authorized by him may require for supervision and inspection of batching, mixing, testing, and transporting to site of ready mixed concrete, be provided by contractor at no extra cost. Copies of all delivery notes shall be submitted to engineer in duplicate on computer generated forms and shall include at least following information: name of supplier, serial number of ticket and date, truck number, name of contractor, name of contract and location of office, grade of concrete, specified workability, type and source of cement, source of aggregate, nominal maximum size of aggregate,
quantity of each concrete ingredient, type of admixture and quantity, water content, time of loading and departure from ready mix plant, arrival and departure times of truck, time of completion of discharge, notations to indicate equipment was checked and found to be free from contaminants prior to batching. A copy of delivery notes shall be given to engineer site representative for each load, unless approved otherwise in advance of batching. All concrete of single design mix for whatever one day's pour shall be from a single batch plant of a single supplier. Ready-mix concrete shall conform to BS 8500 in addition to GSO EN 206.1-1 except materials, testing and mix design be as specified in this section. Transit mixers equipped with automatic devices for recording number of revolutions of drum shall be used. Excess water over maximum allowed by mix design shall not be added. Each mixer truck shall arrive at a job site with its water container full. In event that a container is not full or concrete test gives a greater slump than acceptable, load shall be rejected. Shade temperature and concrete temperature shall be recorded at point of discharge of mixer and at placement for each load of concrete delivered to site. Maximum and minimum temperature and wet bulb temperatures shall be recorded daily. Slump tests shall be performed in accordance with BSEN 12350 or relevant GSO standards at point of placement as stated in Part 6. No other shall be added at site. Appendix A Concrete Plant Inspection Checklist. Qatar General Organization for Standardization Concrete Plant Inspection Checklist. New approval, renewal, regular inspection. General information of plant. Company name, inspection date, plant location, plant numbers, plant manufacturer, plant ID number, approval certification number, contact a plant, Factory condition, concrete floor under mixer and silos, yes, no. Concrete floor with slope under materials, hard and stable surface for access and ramps, floor cleaning plant implements and drainage system, separated plant of waste materials, separated place for of wash tank, material storage and handling, cement and cementation materials including blended cement, if fly ash, GGBS, silica fumes, silos of cement, outside cleaning for cement silos, cement scale calibration, reflective color for cement, silo, board clarity, cement type, silos of cementation materials, outside cleaning for cementation silos, cementation scale calibration, reflect reflective color for cementation silos, board clarify cementitious type, all cementitious materials axis of use protected under shed, aggregates, aggregate shading, aggregate separation under shed, aggregate separation or in bins, aggregate scale calibration, cover for conveyor belts, board clarify aggregate type, effective method for checking level of material inside bins. Water and admixture supply. Water supply, water piped, insulated, chiller using chiller using ice plant or nitrogen cooling, water
gauge calibration, admixture supply, additive storage silos, additive gauge calibration, board clarify admixture type, all admixture axis of use protected under shade, agitation system for all storage tanks or silos more than 5000 liter. Requirements for concrete batching plants. Certificate validity, computer controlled, plant type, computer printout, calibration validity, cleaning of plant blades, record of records for raw materials and cube test. This laboratory. Then you can see recorded required test to QCS 2014 was tested performed frequency of tests. Grading, fines contents, fines quality, clay lumps and friable particles, lightweight pieces, organic impurities, water absorption, particle density, shell content, flakiness index, chloride content, sulfate content, soundness, and Los Angeles aberration, LA aberration, moisture content, compressive strength, other tests, specimen testing at inspection time, items, method of slump test, curing of samples, water temperature of curing tank, concrete temperature at plant, concrete slump at plant. Then laboratory equipment calibration, equipment compression testing machine, sieves, balance, thermometers. Recommendations is a blank here. Then plant representative information, name of representative, contract number, signature, inspector team, inspected by, and signature. Then transportation and placing of concrete. Transportation and placing of concrete. In this general scope of work, references, submittals, transportation, general pumped concrete records, then placing concrete, general preparation, placing, compaction, continuity of concrete work, transportation and placing of concrete. Transportation and placing of concrete. This is really an important one. We have to understand what we can do here because it is very important matter. It is concrete specification, and we cannot move very fast on this. Says transportation and placing means in this we have to link to general concrete plants, formwork, hot weather concreting, and miscellaneous. Then we have to see references as we have seen before. ACI 304 guide for measuring, mixing, transporting, and placing concrete. ASTM 94 specification for ready mix concrete. BS 8500 concrete complementary British standard to BSEN 2061. Then BSEN 2061 concrete specifications, performance, production, and conformity. EN 1992-1-1 Europort to design of concrete structures, general rules and rules for building, submittals. Just hold on. Let me just a little, because there's an electrical problem here. There's no power at the moment, so I'm just going to close it because no power, and there's a problem with inverter also. I can't put additional load. So should contractor propose to use concrete pump,
Should contractor propose to use concrete pumps for transportation and placing of concrete, submit details of equipment and operating techniques proposes to use for approval of engineer. A method statement shall be submitted for approval for major concrete placements, which shall have this very important point. Method times and again I have been stressing method statements, what it should be. Plant rate of placing, number of batching plants, number of trucks, number of positioning of pumps, pour sequence, quality control measures or quality testing, spare equipment, any or whatever else factors that might affect placing of concrete, and you have to judge according to site requirement as a site manager or site engineer or site organizer, whatever your role is, or the quality manager, quality engineer, whatever your role is. Method statement should be submitted at least 3 days in advance or maybe more time of plant pour if required by engineer or some other concerned party. If report planning meeting may be arranged with representatives from the ready-mix supplier, contractor and engineer. Contractor shall submit to engineer for approval details of his proposed operations and standby equipments. Transportation, delivery and handling shall be in accordance with the requirements of BS 8500 and BSE and 2061. Concrete shall be conveyed from mixer to its place in works as rapidly as possible by methods which prevent segregation or drying out and ensure that concrete is of required workability at point and time of placing. Should segregation occur in concrete, material shall be remixed to satisfaction of engineer or discarded. Furthermore, cause of segregation shall be determined and further occurrences prevented. Contractor shall ensure that time between placing of different lifts or layers of concrete is short enough to prevent formation of cold joints. I have been very stressing all time at cold joints. Contractor shall ensure that there is a backup plant that can be used in event of breakdown, and that adequate provision has been made for number of delivering trucks. Concrete shall be transported to site in an approved type of truck, mixture or agitator truck, which apart from cab and chassis shall be painted white and capped clean all times. Discharge chute and other dirty areas shall be washed down after delivery to prevent spillage on roads. If truck mixer or truck body with an agitator is used of central mixed concrete, limit volume of concrete charged into truck to 80% of drum or truck volume per ASTM C94 and NRMC requirements. If shrink mixing is approved by engineer, limit volume of concrete charged into truck to 63% of drum volume. All trucks shall be rotated 30 revolutions at mixing speed before discharging concrete to assure uniformity. Insides of concrete mixed truck shall be inspected periodically and whatever buildup of concrete removed that may impair efficiency of mixing action. All trucks shall be NRMC certified or whatever equivalent certification. Discharge of concrete shall be completed within 90 minutes or before drum has revolved 300 revolutions. Whichever comes first, after introduction of mixing water to cement and aggregates or introduction of cement to aggregates. These limitations are permitted to be waived by purchaser if concrete is of such slump or slump flow after 90-minute time or 300 revolution limit has been reached that it can be placed without addition of water to batch in hot weather or under conditions contributing to quick stiffening of concrete. A time less than 90 minutes is permitted to be specified by engineer. Pumped concrete. Access for pump shall be checked prior to pour. If access cannot be assured, contractor shall not continue with concreting operations. If approval is obtained for pumped concrete,
Contractor shall ensure that shock is not transferred from pipeline to formwork and previously laid concrete. During placing concrete by pumping, end hose must never reach into concrete. All measures shall be taken to avoid blockage of delivery hose system. Compaction of concrete shall be carried out per standard practice procedures. Grout shall be pumped through concrete pump to provide initial lubrication. Initial discharge of pumped concrete shall not be incorporated in permanent works. Where concrete is conveyed by shooting or pumping, plants shall be of a size and design to ensure continuous flow in chute or pipe. Slope of chute or pressure of pump shall allow concrete to flow without use of whatever water additional to that approved by engineer to produce required consistency and without segregation of ingredients. Delivery end of chute or pipe shall be thoroughly flushed with water before and after each working period and kept clean. Water used for this purpose shall be discharged outside and away from whatever permanent works records. Within 24 hours of delivery, contractor shall provide engineer with delivery notes giving information required under paragraph 745 this section. Placing concrete. General. Contractor shall obtain approval of engineer to his proposed arrangements before beginning concreting. All placing and compacting of concrete shall be carried out under direct supervision of a competent member of contractor's staff with a minimum of 5 years of experience in concreting works and in a manner to produce a watertight concrete of maximum density and strength. For night concreting operation, contractors arrange adequate suitable lighting. The contractor shall provide safe, secure access for all personnel on concreting operations. Where thickness of concrete section exceeds 600 mm, contractor shall adopt special precautions to be approved by engineer to avoid thermal cracking due to external and core temperature differentials. Concrete shall not be placed in adverse weather conditions such as dust storms or heavy rain. Preparations. No concrete shall be placed until engineer has inspected and approved in writing surfaces upon which concrete is to be placed. Formwork and reinforcing steel. Contractor shall give engineer at least 24 hours notice to enable this inspection to be carried out. If concrete is not placed within 24 hours of approval being given, approval shall be obtained again before concreting. An inspection shall be made immediately prior to concreting to check cleanliness of forms. Wood forms, unless lined, shall be oiled or wetted with water in advance of placing concrete so that joints tighten and prevent seepage of cement grout from mix. Reinforcement shall be sprayed with a small amount of water prior to starting pour. Reinforcement shall be secured in position, inspected and accepted by engineer before placing concrete. All inserts, anchor bolts, sleeves and other embedded items shall be accurately located using templates where appropriate and held securely to prevent displacement during placing of concrete. Aluminum items shall be completely covered and protected when embedded in concrete. Except where shown on drawings, no fixture shall be attached to concrete by shot firing or drilling without acceptance by engineer. Notwithstanding such authorization, contract shall be responsible for all damages so caused to concrete and make good at own expense. Water shall be removed from excavations before concrete is deposited.
Whatever flow of water shall be diverted through proper side drains and shall be removed without washing over freshly deposited concrete. All the watering works shall be continued as long as required. Hardened concrete debris and foreign materials shall be removed from interior of forms and from inner surfaces of mixing and conveying equipment. Runways or other means accepted by engineer shall be provided for wheeled equipment to convey concrete to point of deposit. Equipment used to deposit concrete shall not be wheeled over reinforcement nor shall runway be supported on reinforcement. Before depositing new concrete on or against the concrete that has set, existing surface shall be thoroughly roughened and cleaned of latent foreign matter and loose particles. Forms shall be retightened and existing surfaces slushed with a grout coat of mortar consisting of cement and fine aggregate in same proportion in mix, but not leaner than 1 part cement to 2 parts fine aggregate after existing surface has been moistened. New concrete shall be placed before grout has attained initial set. Horizontal construction joint shall be given a brush coat of grout consisting of cement and fine aggregate in same proportion of as concrete to be placed, followed by approximately 75 mm of concrete of regular mix except that proportion of coarse aggregate shall be reduced 50%. High strength grout for precision support of machines based and base and sole plates, including equipment subject to thermal movement, tanks, columns, base plates, bridges, seats, anchors, bolts and dowels, etc., shall be a non-shrink, ready-to-use, fluid precision grout material. Proportion mixed, pre-mixed and packed at factory, delivered to job site to be placed. Only addition of water from work and curing shall be specified now because it's already late, more than 2 hours. I will talk about this matter later on, and I'm now going to stop this sharing, and purpose is that whatever is done, it is concrete. We have to understand its requirement. I'll talk later on because in one light is not available, power is not available, and in one go we cannot do it. So we have to understand importance of concrete. That's very very important from engineering viewpoint and from quality viewpoint. And if you don't understand it, as many times I've told, this is not only concrete. This is project, and this is quality, and this is contract, and ultimately contractor is a responsible professional, and engineer is above all, and both have to work together. And if you don't understand quality of concrete, structure of concrete, not only structure itself, structure of concrete, until we understand all this, we cannot give better work. So I stop at this point here. I'm a little tired as well, so I stop at this point, and I hope you enjoy this. And I may say that fine, it's okay, and then you can say stop sharing.